friends, and how are you doing today? As you know that I try to bring the latest related to the IELTS exam, and today's video is related to the IELTS speaking cue card. And once again, it's the cue card that you won't find in any other book related to the IELTS speaking, but you can certainly find it in the IELTS speaking booster. जैसे ही हमें स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा कुछ कंटेंट रिलेटेड टू द आइल्स स्पीकिंग एग्जाम विच इज़ एब्सोल्युटली रीसेंट जो उन्होंने खुद अपनी एग्जाम एक्सपीरियंस किया है, वी ट्राई टू अपडेट इट एज सुन एज पॉसिबल विद यू। तो जैसे ही हमारे पास एक स्टूडेंट ने ये बताया कि लेटेस्ट उनसे जो क्यू कार्ड पूछा गया है, डिस्क्राइब अ क्रॉप यू आर फेमिलियर विद, जिसके क्यूज हो सकते हैं व्हाट क्रॉप इट इज, व्हेन एंड वेयर इट इज ग्रोन एंड व्हाट डू यू नो अबाउट इट। तो आपके लिए मैं इसका लेके आया हूँ इस वीडियो में सैम्पल आंसर। तो कंट्री साइड रिलेटेड आप इसके कुछ और जो पार्ट 1 टॉपिक हैं उन्हें यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर लिंक रहेगा, अगर आप पार्ट 1 टॉपिक जो कंट्री रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, फार्मिंग रिलेटेड हो सकते हैं, आप ये भी देखिए। एंड फॉलो अप्स के लिए सर्टेनली आप आइल्स स्पीकिंग बूस्टर बाय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन एंड चेक आउट द आइडिया बिहाइंड द क्यू कार्ड व्हिच इज अबाउट द क्रॉप वीट। और वीट हमारे पंजाब में कितना इंपॉर्टेंट है आप सबको पता है। इसकी फार्मिंग जो है तकरीबन हर जगह पर होती है और बहुत ही सरप्लस इसकी प्रोडक्शन होती है। वी कैन टॉक अबाउट इसके सोइंग टाइम और हार्वेस्टिंग टाइम के बारे में बता सकते हैं। और इसकी हार्वेस्टिंग के साथ एसोसिएटेड है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल ऑफ वैसाखी, और इसी की सेलिब्रेशन के बारे में हम कह सकते हैं कि हमारे कल्चर से भी बहुत जुड़ी हुई है। एट द सेम टाइम वीट हमारा स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब रहता है ऐसा फूड जो डेली बेसिस पर कंज्यूम होता है। वी कैन टॉक अबाउट कि आपके कोई अंकल हैं जिनके फार्म्स हैं और आप वैसे भी फार्म से कोई ज़्यादा दूर तो रहते नहीं हैं, जिसकी वजह से आप इस क्रॉप से काफ़ी हद तक फेमिलियर हैं, क्योंकि आपके अंकल आपको दिखाते हैं कि कैसे इसे ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। यू कैन टॉक अबाउट इट्स रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द रीजन। तो मैसिव प्रोडक्शन की वजह से इसे काफ़ी हद तक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं इन द इकोनॉमी ऑफ पंजाब। एंड फाइनली वी कैन इवन टॉक अबाउट बिट नेगेटिव के काफ़ी फूड जो है प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से वेस्ट हो जाता है। ये क्रॉप एट एन एवरेज 30% तक तो वेस्ट ही हो जाती है। एंड आई बिलीव कि इन फ्यूचर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप रहेगा एरिया का, और इसकी मैनेजमेंट पर वर्क किया जाएगा better. So this is pretty much the idea behind, and I hope you also love the lovely views of the fields. And let's check out the sample answer. But before I move ahead, I request you to please subscribe the channel and help me to grow more. And for that, please hit the like button and leave comments for me. So let's check out the sample answer of this cue card. Well, I come from Punjab, a state known for agriculture. All types of crops are grown here, but the one I would like to talk about is wheat. Actually, Punjab is the biggest producer and consumer of wheat, as wheat flour bread is part of staple food in this region. I'm familiar with this crop since I do not live too far from country area where in massive farms wheat is cultivated. The land of this region is highly fertile and the weather conditions are conducive to the production of this crop. Actually, my uncle is a farmer and I often visit his farms where he shows me how this crop is cultivated. The sowing of this crop takes place in the month of November and it is harvested in the month of April. And a very famous festival of Vaisakhi is associated with this crop, as farmers begin the harvesting with this celebration. Wheat is not only associated with the culture of Punjab, but it is also imperative to the local economy. The fact is that due to mechanization of farming, the output of this crop has increased substantially, and today millions of tons of wheat is exported internationally, which contributes to the local economy. However, every year 30% of the produce could not reach the dinner plate due to mismanagement or poor management.
Therefore, it is the need of the time that states should develop facilities like warehouses and silos to ensure the food waste could be avoided along with the loss of nature. I believe this crop is going to remain integral to the local culture and economy in future too. You can also find the sample answer of this cue card along with the follow-ups in the Speaking Booster in written version, and you can unlock this book in 30 seconds. Let me show you how you can purchase Speaking Booster. Download IELTS coaching application from Google Play Store. If you're an Apple user, then download My Institute app and enter code IELTS IELTS. On home page, click on Store and choose Speaking Booster. Click in Buy Now and pay online to unlock the book for next 6 months. And that's it. You're done. Happy buying!